Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Dembele, yes, Rafinha, of course, and that saga, bhai, Jules Kounde. Five players Barcelona has kind of gotten over us. Fair enough, fair point, no problem. लेकिन भाई finally we have got one player over Barcelona, or that is yes, हमारा captain fantastic. It is leader and legend definitely. Cesar Azpilicueta is a Chelsea player for now and for the next 2 years. For those of you who have been living under a rock, but उतना ही नहीं. Chelsea have made some madness in the transfer window. पता नहीं इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. Hopefully it gets right. But yes, Marc Cucurella is done. Yes. थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कल ऑलरेडी मैंने बताया था लेकिन like I said yesterday as well, this is done and someone going in the other direction. But there is something else happening, or that is the center half as well as the central midfielder. So बने रहना लास्ट तक यार, come on. लाइक कर दीजिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और यस वी आर गोइंग टू बी लाइव टुडे फॉर द फैंटेसी प्रीमियर लीग ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, तो उस चैनल को मत भूलिएगा प्लीज. एंड ऑफ कोर्स वॉच अलोंग फॉर द लाइव मैच ऑफ कोर्स. यहाँ पर चलो, यहाँ पर चलते हैं. सेजार एस्पिलिक्वेटा का क्या है न्यूज यहाँ पर क्विकली आई एम शेयरिंग. ऑब्वियसली दिस इज द फेब्रिशियो कंफर्मेशन मैं कर रहा हूँ. प्रीटी ऑब्वियस, ये इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफिशियल बाय द टाइम आप देखोगे. It is basically Cesar Azpilicueta has signed a new deal with Chelsea to stay 2 more years at the club. Here we go. Deal completed today between Chelsea board and Azpilicueta. It will be officially announced soon. And yes, Barcelona had an agreement for a 2 year deal. So he will be here till 2024. और हाँ आप बोलोगे भाई come on 34 तक he's going to be playing at basically his prime, you can say that. लेकिन नहीं, he may not start, or will he? अब देखेंगे यार. You know what, इस वीडियो में हम देखने वाले थोड़े से और टैक्टिक्स. अभी जो चेल्सी ने स्पेंडिंग की है, जो करने वाले हैं और जो पॉसिबल है, जो नहीं है, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11, व्हाट विल बी द बैकअप 11, एंड ऑफ कोर्स जो बाहर जाने चाहिए, हम क्विकली डिस्कस करेंगे. सो यस, अगेन बने रहना लास्ट तक. तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे यार, सेजार एस्पिलिक्वेटा डेफिनेटली एक लीडरशिप एलिमेंट लाते हैं. दैट समथिंग जो हमारी बैकलाइन में मिसिंग है अभी. यस, थियागो सिल्वा इज देयर, कुलिबाली इज देयर, लेकिन दे हैव नॉट बीन इन चेल्सी सो लॉन्ग. अलोंसो वन ऑफ देम, जो ही हैज बीन क्वाइट लॉन्ग एज वेल, लेकिन हाँ, Alonso does not come across as a leader anyway, or even he might leave, right? जो हमें likely लग रहा है, काफी लग रहा है, हाँ वहां पे मैंने मजाक किया था, by the way, it was just for banter, Barca, Chelsea and all that, right? हम probably Alonso को बेचेंगे to Barcelona. Yes, थोड़ा सा valuation correct कर दीजिए, because Azpilicueta का वही है, Tuchel and Chelsea did not like the valuation जो बारसा ने की थी for Azpilicueta, and of course he called up Xavi yesterday and confirmed that okay, come on भाई, I have to kind of go with Chelsea because Premier League is starting. 2 दिन पहले of the Premier League, I need to kind of confirm things. Or Barca here asked for a few more days, looks like, लेकिन he was not agreeing for that, and he was like, नहीं. Chelsea fans have loved me, and of course, Chelsea FC का statement भी आ गया. That is quite clear that he is going to be loving Chelsea and being here for the next 2 years. So now, what about the next news? The next news is obviously about Cucurella. Cucurella का क्या है यहाँ देखते हैं. There has been some developments in the last few hours, and this is of course. अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे फेब्रिशियो का ही ट्वीट. मिस्टर फेब्रिशियो, यहाँ देखिए, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 4-5 घंटे पहले आया था ये. आफ्टर मेडिकल कंप्लीटेड, Chelsea and Brighton set to sign documents for Marc Cucurella deal. So yeah, he was in London to complete his medicals yesterday, that is Thursday, right? Now, exclusive details. Chelsea will pay 55 million fixed plus 7 million add-ons. Wow. Levi Colwill will join Brighton on loan until 2023. Okay, चलो, यहाँ लोन है, not a fee. So यहाँ पर कल का न्यूज के हिसाब से we were expecting a fee for Levi Colwill. हाँ, buyback डबल था, लेकिन we were expecting a fee, और we were kind of यार 52.5 होगा for Cucurella. आज things have changed. Yes, no fee. It will be a loan fee at best. और भाई, look at this, 55 million pounds. I don't know why double standard for Chelsea and Man City here. For Brighton, come on, yaar, it's not fair. लेकिन anyway, they are selling, so you cannot say anything. और Chelsea desperate है. और उसके बाद में एक और आया है, 1 घंटे पहले ही आया है, as I'm recording. Chelsea and Brighton have been preparing contracts in the night in order to get Marc Cucurella deal signed on Friday. Medical was perfect, so medical has been completed, people, and Thomas Tuchel is now waiting for him. Fee confirmed as earlier advanced, or as advanced earlier. 55 million guaranteed plus 7 million in add-ons to Brighton. Again, aap kya bologe? Too much? Definitely too much. Yes, he's a great signing. He's a young guy जो compete करेगा directly with Chilwell
और आर्ग्यूबली यू कैन से कम ऑन एज अ बैकअप, अगर वो खेलेगा नहीं हर एक मैच, व्हाई आर यू पेइंग सो मच? लाइक कम ऑन यार, दूसरे क्लब करते करते तो इट्स फेयर, चेल्सी करते तो नॉट फेयर। कम ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी फॉर एग्जांपल, हाँ, नथिंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और दैट इज द रियलिटी ऑफ मार्केट आज के दिन। लेकिन आई स्टिल फील इट्स अ बिट टू मच। मे बी वी कुड हैव इन्वेस्टेड बेटर अगर हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रहता, लेकिन वी ऑल्सो नीडेड दैट अपग्रेडेशन, क्योंकि अलोंसो एज मच एज इज गुड गोइंग फॉरवर्ड, ही इज नॉट गुड डिफेंसिवली, हमें पता है, एंड एमरसन इज नॉट रियली अ विंग बैक। हाँ, बाय द वे, कुकुरेया कैन प्ले सेंटर बैक एज वेल। तो यहाँ पे हम क्विकली टैक्टिक्स पे आ जाते हैं, बिकॉज यस, बिफोर दैट, क्विक ब्रेकिंग न्यूज अबाउट फोफाना यार, फॉर पीपल हु डू नॉट नो। फोफाना का बेसिकली चेल्सी ने किया था बिड 60 million pounds, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय लेस्टर ऑन थर्सडे, एंड एज पर रिपोर्ट्स 85 million अभी भी लेस्टर इज आस्किंग फॉर minimum, and Chelsea are okay to pay that. Yes, you heard that right. But as per reports, Chelsea will test Leicester एक और बार this weekend. Hopefully, we will bid something below 85, so somewhere around the 70s is what I'm talking about. So वहां पर हम बिड करने वाले एक और, तो लगता है वो हो जाएगा मेरे ख्याल से मिड 70s में। एनीवन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यस, अगेन यार, उसका भी टू मच है, बट अगेन ही इज अ वेरी यंग गाय, और बहुत अच्छे है प्रीमियर लीग में, उन्होंने खेला है ऑलमोस्ट 40 गेम्स फॉर लेस्टर सिटी, एंड ही इज डन रियली वेल फॉर ईयर एंड हाफ। सो यू कैन से दैट वी नीडेड दैट। एस्पिलिक्वेटा और सिल्वा ऐसे भी हर एक मैच शुरू नहीं करने वाले, राइट? तो इसलिए थ्री द बैक सिस्टम, और ये क्वाइट ऑब्वियस है दैट वी माइट जस्ट प्रेफर अ थ्री एट द बैक टू बिगिन विद, नाउ दैट एस्पिलिक्वेटा रह रहे, बिकॉज कम ऑन, ही इज नॉट अ प्योर राइट बैक एनी मोर, बट लेट्स सी, आई माइट बी रॉन्ग, थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज ये टैक्टिक्स पे देख लेते हैं क्विकली, यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या पॉसिबल है। बिफोर दैट मैं दिखा रहा हूँ स्पेंडिंग, क्या इज ऑन, व्हाट इज नॉट ऑन, लेट मी सी। सो आई एम गोइंग टू शो एन एक्सेल शीट, यस, थोड़ा एक्सेल एक्सेल भी दिखा देते हैं आज यार, क्या बोलते हो? तो देखिए यहाँ है, यस, तो यहाँ वी हैव साइंड 6 प्लेयर्स, यस, 6 प्लेयर्स हैव बीन साइंड, स्टर्लिंग, कुलिबाली, चुकुमेका, स्लोलिना एंड कुकुरेया। यस, स्लोलिना इज नॉट गोइंग टू बी कमिंग एनी टाइम सून, लेकिन जनवरी में आएंगे, लेकिन भाई हमने स्पेंडिंग तो की है, राइट? तो आप यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो दिस इज बेसिकली the 6 people that are on board. Obviously, Cucurella is just a matter of hours. ठीक है, 160 million, कोई हाईजैक नहीं होने वाला पीपल, लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, बाय द वे, मैं एक और चीज दिखाने वाला हूँ, इज इट वर्थ कुकुरेया टू स्पेंड सो मच? एक और रीजन है, मेरे ख्याल से देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन हाँ, ब्रिलियंट प्लेयर अगेन। 160 million इज समथिंग जो हम स्पेंड कर चुके हैं एज पर रिपोर्ट्स, ठीक है। इन माय ओपिनियन, में कलर कोडिंग टीम किया हो, क्योंकि इन माय ओपिनियन ये दोनों भी वी माइट गो, बिकॉज एज पर रिपोर्ट 300 million इज व्हाट मिस्टर बोली एंड को आर ओपन टू काइंड ऑफ गिविंग चेल्सी वॉर चेस्ट प्रॉपर। 300 million आप देख रहे हैं, 300 million, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल, और मुझे लगता है 300 million में दीज टू विल बी प्रिफर्ड फॉर फान एंड डियोंग, क्योंकि यार मुझे लगता है वी नीड अ सक्सेशन प्लानिंग फॉर कांटे एंड जॉर्जिनो, जो देख रहे हैं टूकल, एंड एज पर रिपोर्ट्स एज वेल फोफाना डेफिनेटली अगर आते हैं 70-75 million में, आई थिंक वी विल गो फॉर इट। वो साइंस है, क्योंकि he himself wanted to come, he has changed his social media kind of things by removing Leicester reportedly, right? लेकिन वी कैन ऑल्सो गो फॉर दीज, यस। हाँ, बेंजामिन सेस्को अगर आप बोलोगे तो दोनों में से अगर एक करूंगा तो बेंजामिन सेस्को कैन कम, लेकिन अगेन ही इज 50 million, तो दोनों को मिला 50 million होगा, तो आई थिंक आई रादर हैव दीज टू। दिस इज द आइडियल, एकदम आइडियल जो बोलते हैं ना, आइडियल ट्रांसफर विंडो, जो भाई साहब क्या कर दिया है। लेकिन डू वी नीड 10 इनकमिंग्स? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा फॉर अ स्क्वाड? yes, of course, we need a finisher, we need a wing back as well, because Azpilicueta is not really wing back, लेकिन I'll talk about it, हम क्यों कवर कर सकते हैं उसको as backups. We don't really need a Dumfries or a Walker Peters, as much as I would like a Dumfries personally, as much as I would like a CR7 or Depay personally, लेकिन reality ये मुझे likely लग रहा है, तो 300 million is itself too much. आप बोलिए what do you think about it? और yes, coming to quickly, और हम tactics पर आएंगे, just wait on a second, यहाँ पर मैं quickly दिखाता हूँ क्यों मुझे लगता है कुकुरेया का जो पैसा हमने दिया ना, हाँ, इज अ यंग चैप, 6 years डील है एंड ऑल दैट, हमें वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन स्टिल आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स, डेफिनेटली आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स, बिकॉज मुझे लगता है इवेंचुअली, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज मैंने बोला बारसा 5 चेल्सी 1 हो गया स्कोर अभी, इट माइट बिकम 6 और एज 6-1, और इसके लिए इवेंचुअली दिस इज व्हाट आई रियली फील। तो देखिए, इन्होंने बोला था 2021 में कि इट्स अ थॉर्न इन माय साइड दैट आई मेड माय बार्सिलोना डेब्यू, बट आई नेवर प्लेड एट कैंप नो। आई थिंक दैट्स समथिंग I would like to do before I retire on. Yes, he plays for the Catalan team, right? The national team as well. So
a Spanish international. Definitely there is a question mark. He might go to Barcelona eventually. अब देखते क्या होता है. Maybe we'll get a bigger transfer fee then, knowing the transfer market. But coming to tactics, people, come on. There's a lot of tactics to be discussed because यार क्या पॉसिबल है. हम इतने सारे साइनिंग्स के साथ जा रहे हैं. बर्ली हैज गॉन क्रेजी आप बोलोगे, लेकिन यार देयर इज अ स्ट्रेटजी टू इट बिटवीन टुकल, बर्ली एंड को, मेरे ख्याल से. और यहाँ पे मैं शेयर ही करने वाला हूँ. लेट मी एक्चुअली ट्राई एंड ओपन द फर्स्ट आइडियल 11 जो मुझे दिखता है. टुकल वांट्स टू स्टार्ट से 1 सितंबर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इन माय ओपिनियन ही वांट्स टू डू. टुकल आप भी कमेंट करिएगा इन द चैट. यहाँ पर आप देखिए, this is what I feel. Yes, you would say Mount and Sterling up top, लेकिन हाँ, Tuchel is building a base from the back and midfield and kind of, using his wing backs. वो हमें पता है, he uses them to kind of join in midfield and attack. तो वहां पर this is what I'm looking at a starting 11 potentially. Very very strong for यहाँ पर arguably you can say it's the strongest back five यार, मतलब और strongest back three as well. It's too strong. Even midfield भाई काफी strong है, तो आर्ग्यू नहीं कर सकते. हाँ, up front there's a problem, लेकिन again we are unfortunately or fortunately आप बोलोगे we are relying on Sterling. And of course Mount यार, he has improved as a shot taker in my opinion. तो let's hope that Cucurella and James can add on to the attack if हम खेले ये वाला formation. Again ये मेरा gut feel है, going by the report जो हम जा रहे हैं and going by whatever we are seeing right now. मैं एक और share करने वाला हूँ. This is going to be a backup 11 for that formation. Because the kind of people who have been extended or signed or very very close reportedly है, they kind of fit this formation better in my opinion. तो ये मेरा होगा predicted 11, not preferred लेकिन predicted 11 backup. देखिए, yes, Chukwuemeka will be staying. आपने सुना है काफी रिपोर्ट्स ये भी बोले हैं he is going to stay, but Pulisic, Havertz, Gallagher, Jorginho, Chukwuemeka, Chilwell, Loftus-Cheek, एमरसन, चालोबा, एस्पिलिक्वेटा एंड बेटिनेली अनफॉर्चुनेटली बिकॉज लोनिना है नहीं अभी, और हमने बेचना है केपा को बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द बुक समवेयर इन माय ओपिनियन राइट. लेकिन लॉफ्टस-चीक राइट विंग बैक, यस अगेन ये मेरा प्रेफर्ड नहीं है. मैंने बोला था टुकल्स बैकअप 11, दिस इज व्हाट इट इज इन माय ओपिनियन बेस्ड ऑन जो साइनिंग हो रहे और हम जो लिंक था. आप कमेंट करिए इस पर व्हाट डू यू थिंक. बट यस, स्क्वाड ऑफ 22 इज नॉट इनफ, सो हमें रखना पड़ेगा. यस, पीपल जो असाइन नहीं हुए स्क्वाड नंबर्स, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम बेचना चाह रहे हैं, और वो है बैचुआई है, बाकली है, मे बी आम्पडू है. बाकली का है क्या स्क्वाड नंबर पता नहीं, लेकिन हाँ आम्पडू है. देन मे बी इवन मलंग सार हु हैज बीन लिंक्ड वेरी स्ट्रांगली टू मोनाको है, तो दे दोज विल नॉट बी. यस, इसलिए मैं एमरसन रखा हूं. लेफ्ट सेंटर बैक हुज डन प्रीटी वेल इन प्री सीजन आई नो, बट वो एक्सपीरियंस भी है. लेफ्ट सेंटर बैक बैकअप के लिए इज ओके. ऑल्सो ही मे नॉट बी अ बैकअप, इट माइट बी रियली कुकुरेला जो खेले कभी कभी लेफ्ट सेंटर बैक राइट. लेकिन आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट विंग बैक में यू विल हैव ऑप्शंस ऑफ चिलवेल, Cucurella, of course Emerson as well, he can play there sometimes. और the fourth choice जो होने वाला है अपना 23rd member of the squad, Callum Hudson-Odoi, because he can also become an attacker. ठीक है, तो यहाँ पर we have options same as right wing back. आप देखिए Azpilicueta, Loftus-Cheek, Reece James and Callum Hudson-Odoi, तो वहां पर काफी ऑप्शंस है. एंड वी हैव गुड कवर इन मिडफील्ड एज वेल. Loftus-Cheek कैन बी अ कवर, ही कैन बी अ 7th मैन मिडफील्ड 3+3 जो फर्स्ट 11 और सेकंड 11 के थे. देन हु एल्स, आई थिंक चालोबा कैन आल्सो प्ले इन मिडफील्ड. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इसमें. रीस जेम्स कैन आल्सो एक्चुअली प्ले इन मिडफील्ड. तो 9 ऑप्शंस है भाई मिडफील्ड में. तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मेशन जरूरी है, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे टुकल, गड़बड़ हो जाएगी. और वी आर नॉट गोइंग टू सेल लाइक 10-15 प्लेयर्स अभी यार, इतने सारे प्लेयर्स बाकी है. आप बोलिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और डू यू थिंक दैट अटैक इज टू वीक. Of course 24th member of the squad can be a young goalkeeper, and yes, Billy Gilmore also has not been assigned a squad number. Not too great for him, लेकिन again Chukwuemeka आया है तो maybe he'll be better is what I'm guessing. यहाँ पर मैं एक और शेयर करने वाला हूँ अभी, and this is going to be an alternate formation in certain games, horses for courses आप बोलोगे, लेकिन again based on the person हमें रखना चाहिए certain more personal based on जो हम reports सुन रहे हैं. तो yes, ये हो सकता है भाई. Even in the back four we are looking very good, लेकिन आप बोलोगे यार फोफाना लेने के बाद you won't start him paying 75 million. Well, he's just 21 if I'm not wrong, so why not. In again मैं certain games के लिए बोल रहा हूँ, not every game. ठीक है, we can go. I don't think हम 4 at the back जाने वाले, that's my personal opinion, because Tuchel is building from the back, looks like it again. लेकिन let's see, I won't mind. मेरा personal मैं preference बोलूँ, this is my preference to be very honest about it. Yes, Koulibaly, Silva probably at this stage will not be ideal in the back four, लेकिन they can do the job है. What 1-2 साल पहले तक they were doing it, so why not now. लेकिन अगेन आप लोग बोलिए व्हाट यू थिंक अबाउट इट. एंड द लास्ट
ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ वो एक बैकअप 11 ऑब्वियसली इन 4-3-3 फॉर्मेशन अगेन विच इज टुकल्स प्रेफर्ड फॉर्मेशन प्रीवियस क्लब्स में. तो ये है आपका फाइनल 11. आप बोलिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो yes Ziyech should remain because in my opinion अगर 4-3-3 हम खेलेंगे lot of games then Ziyech should be convinced to stay and I hope he doesn't go to Manchester United यार. That's what I can say. But maybe Ziyech और Werner में से एक रहेंगे in that case if we play 4-3-3 because we need a wide forward. And yes, Baki they kind of pick by themselves. Not much to explain here. Only thing is yes, again that extra member of the squad will be Callum Hudson-Odoi in my opinion यहाँ पर. And yes, Ruben Loftus-Cheek भी हो सकते हैं इसमें as well as an extra goalkeeper with 5 substitutions, 25 member squad, not a bad number as well, और people will get game time as well. तो यहाँ है मेरे kind of combinations जो मैंने सोचा है. What do you think of it? Let me know. And what do you think about the price for Cucurella? Of course, the Azpilicueta decision and of course Fofana हम जो जाने वाले. Comment करेगा and join us live on both the channels. Till next time, take